Hello children, how are you? Good morning and welcome back in our grammar session. So children, today we are going to start comprehension. Okay, comprehension. So let's see what is comprehension. Comprehension is the ability to understand completely and be familiar with a situation, facts, etc. Comprehension in English language. In the English language, a small passage or a short story is called comprehension, normally used as a test to find out how well a students understand written or spoken language. तो बच्चों comprehension क्या है? Comprehension है वो it is a ability to understand completely and to be familiar with the situation. यानी comprehension में आपको एक पैसेज यानी एक पैराग्राफ दिया जाता है, राइट? वो कोई टेक्स्ट बुक पे यानी कोई चैप्टर के लेसन के बेस पर भी हो सकता है, या तो फिर पोएट्री राइट यानी पोयम का भी हो सकता है. ओके, तो आपको उस पैसेज या फिर पैराग्राफ है, राइट, उसको आपको अच्छी तरह से पहले रीड करके उसको समझ लेना है. ओके, तो और वो एक शॉर्ट स्टोरी होता है या तो फिर शॉर्ट पैसेज होता है, राइट. तो आपको पहले तो अच्छी तरह से उसको रीड करना है और उसमें क्या कहना चाहते हैं, राइट, वो आपको पहले समझना है. ओके, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन, व्हाई इज कॉम्प्रिहेंशन नीडेड, यानी कॉम्प्रिहेंशन क्यों ज़रूरी है. The purpose of comprehension is to check the ability of students to understand the passage and process the information provided in the passage. यानी comprehension है वो student के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि comprehension से हमें students की जो understanding ability होती है उसके बारे में हमें पता चलता है, right? So comprehension is to check the ability of the student to understand the passage, यानी पैसेज में से स्टूडेंट को क्या समझ में आया उसका भी पता चल जाता है. एंड द प्रोसेस द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज, यानी पैसेज में जो इंफॉर्मेशन है, राइट, जो दी गई है, राइट, उसमें क्या कहना चाहते हैं वो भी समझ में आ जाएगा. Comprehension, how are skills tested? So, a few questions are asked at the end of the passage to evaluate how well you have understood the passage and how efficiently you have processed the information provided in the passage. यानी comprehension में आपका जो पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा तब आपको थोड़े क्वेश्चन लास्ट में एंड में पैसेज के अंदर पूछे जाते हैं. ओके, तो आपको उसका आंसर है वो लिखना होता है या फिर आंसर देना होता है ओरली. ओके, तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप जो पूरा पैराग्राफ रीड करते हो तो आपको उसमें से क्या समझ में आता है, राइट. मेन उसका जो पॉइंट है, राइट, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो किसके बारे में है ये आपको पहले पता होना चाहिए. ये तभी आपको पता चलेगा जब आप पूरे पैसेज को अच्छी तरह से 2 या 3 टाइम्स रीड करोगे. ओके, comprehension, a few tips on how to do comprehension. First number, read the passage reasonably fast to get a general idea. reasonably. ओके, यानी आपको जो पूरा पैराग्राफ जो दिया जाता है उसको आपको पहले अच्छी तरह से पहले रीड कर लेना है तो आपको आइडिया आ जाए कि इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं इस पैसेज में. ओके, देन नंबर सेकंड, रीड अगेन अ लिटल स्लोली टू नो द डिटेल्स. ओके, उसके बाद आपको दूसरी बार भी उसको धीरे धीरे रीड करते हुए जाना है कि उसके डिटेल में आपको क्या कहना चाहते हैं वो आपको बात समझ में आएगी कि ये पैराग्राफ है वो किसके बारे में है. ओके, स्टडी द क्वेश्चन थोरली, टर्म ऑफ द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द पैसेज. ओके, यानी यहाँ पर आपको पूरा जो पैराग्राफ है,
राइट। उसमें से रिलेवेंट पोर्शन, पैसेज के अंदर जो रिलेवेंट पोर्शन है उसके बारे में भी आपको पूरा सबसे पहले रीड करके बाद में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट, वो देखते हुए ये किसके बारे में है वो समझना है। यूज़ कीवर्ड्स फॉर द पैसेज एंड क्वेश्चन टेक्स्ट। ओके, तो आपको जो पैसेज के अंदर कीवर्ड्स है उसका भी यूज़ करना है। ओके, और क्वेश्चन जो दिए गए हैं तो उस क्वेश्चन को रीड करते हुए आपको कॉम्प्रिहेंशन में से जो उसके जो करेक्ट आंसर है उसको फाइंड करने हैं। तो बच्चों, आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ को 1 या 2 टाइम या तो फिर 3 टाइम थोरोली पहले रीड कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस हिसाब से आपको उसके आंसर लिखने होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको 1 2 टाइम ये पैसेज रीड करके आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें पैसेज में कहना क्या चाहते हैं। ओके, मेन जो कॉन्सेप्ट है पैसेज का वो किस बारे में है। ओके, तभी आपको इसके आंसर समझ में आएंगे कि इसके आंसर में हमें क्या लिखना है और इसका आंसर क्या आएगा। ओके, सो कॉम्प्रिहेंशन is a one part of our subject. Okay, so हमें इसके बारे में पता होना ही चाहिए। So let's see one example from our extra marks. Okay, Once there lived a king who had a very faithful monkey as his guard. The king relied on the monkey, and in return, the monkey guarded the king very sincerely. One night, when the king was sleeping very peacefully, a housefly entered his chamber. The monkey tried his best to catch the fly, but the fly was too quick for the monkey. Finally, the fly sat on the king's nose. The monkey did not want the king to be disturbed. Ooh. He quickly took out the king's sword and killed the fly. Though the fly was dead, the king's nose was also hurt. It was a cut at the tip. Now the king realized his folly. Later, the king kept men as his guard. This was a simple and engrossing story to listen to, isn't it? Let us find out how much of this story that we just heard has been understood. Try to answer these questions. What was the monkey working as in the palace? Why was the monkey working sincerely? Who had entered the king's chamber? Was the monkey able to get rid of the intruder? Was the mission a success? What happened to the monkey after this mission? If you have been able to answer these questions correctly, it means that you have been listening to the story very attentively and have been able to comprehend what you heard. Let us see the answers for the questions. What was the monkey working as in the palace? The monkey was working as the king's guard in the palace. Why was the monkey working sincerely? The monkey was working sincerely because the king relied on him. Who had entered the king's chamber? A housefly had entered the king's chamber. Was the monkey able to get rid of the intruder? Yes, the monkey was able to get rid of the intruder. Was the mission a success? The housefly was dead, but the king's nose was hurt. It was cut at the tip. What happened to the monkey after this mission? The king realized that it was not wise to appoint a monkey as his guard. In place of the monkey, the king appointed men as his guard. If your answers are similar to these,
then you have been able to comprehend the story well. Comprehension is understanding and interpretation of what we have read or heard. One important part of comprehension is to have a sufficient vocabulary or know the meanings of enough words. For strong comprehension, one must be able to draw conclusions about what was read or heard, what is important, what is a fact, what caused an event to happen, the characters. Thus, comprehension involves reading or listening with thinking and reasoning. Recap. Today, we learned about comprehension. Let us recapitulate the main points to keep in mind while doing an activity of comprehension. Comprehension is understanding and interpretation of what we have read or heard. One important part of comprehension is to have a sufficient vocabulary or know the meanings of enough words. For strong comprehension, one must be able to draw conclusions about what was read or heard, what is important, what is a fact, what caused an event to happen, the characters. Thus, comprehension involves reading or listening with thinking and reasoning.